Freedom is not free. It still costs soldiers. And this is something which I want civilians to understand. At minus 50 degrees, plus 50 degrees, in jungles, in ravines, in remotest corners of this world. And some of them are losing their lives not because they are being shot or they are facing bullets, because of the elements, because of the weather that they face. हेलो सर, कैसे हो आप? I am always fine, always and every time. Bold, underline, capital, italics, font 60. और कुछ बच गया तो बता देना, अगली बार वो भी ऐड हो जाएगा. दैट्स नाइस टू हियर सर। सर, सबसे पहले ऑडियंस को आप ये बता दीजिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? बिलोंग तो मैं भारत से करता हूँ. मैं एक भारतीय सिटीजन हूँ एंड आई बिलोंग टू भारत. नाइदर सिटी, स्टेट, लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर. आई डोंट आइडेंटिफाई एनीथिंग. एक मूवी का डायलॉग है, आपने सुना होगा, जहाँ पे रिलीजन लिखते हैं ना, वहाँ पे हम प्राउड से इंडियन लिखते हैं. दैट्स माई रिलीजन, एन इंडियन सिटीजन. आई बिलोंग टू इंडिया. दैट्स नाइस टू हियर सर। सर, आपकी स्कूलिंग और आपका ग्रेजुएशन ये कहाँ से हुआ? स्कूल मैंने वडोदरा, गुजरात में एक शहर है, उधर से किया. मतलब पूरी स्कूल, राइट फ्रॉम नर्सरी टिल 12th. मैंने 2-3 स्कूल में किया है. उसके बाद 12th के बाद मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की. 3 साल उधर मैंने ग्रेजुएशन किया, BSc. और उसके बाद मैं इंडियन एयरफोर्स में कमीशन हो गया था एज अ फाइटर पायलट. सब्सिक्वेंटली फ़ौज में ये मौका दिया कि मैं एक मास्टर्स इन डिफेंस स्टडीज़ करूं. और उसके बाद मैंने रिटायरमेंट के बाद जब मैं सिविल एविएशन में आया तो मुझे लगा कि सिविल एविएशन के बारे में भी कुछ सीखना चाहिए. तो फिर मैंने MBA किया एविएशन में, फिर PhD किया और अब मैं करंटली एविएशन में लॉ परस्यू कर रहा हूँ. दैट्स ग्रेट सर। एंड सर, ये जो करियर है आपका इंडियन एयरफोर्स की तरफ जो गया है, ये आपने खुद से चूज किया है या फैमिली के सपोर्ट से या फैमिली ने बोला? मैं कंप्लीटली सिविल बैकग्राउंड से हूँ. मेरी फैमिली में कोई भी दूर दूर तक फ़ौज में नहीं था. द क्लोजेस्ट रिलेशन टू फौज वॉज माई ग्रैंडफादर, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिफोर इंडिपेंडेंस थोड़ा सा पार्ट लिया था. उसके अलावा फ़ौज में कोई रिलेशन नहीं है. तो ये मेरा खुद का ड्रीम था. हाँ, जब मैं स्कूल में था तो मैं वडोदरा में एक एयरफोर्स स्टेशन है, तो मैं काफ़ी एयरफोर्स ऑफिसर्स को देखता था. और बचपन में मैंने एक फ़िल्म देखी, विजेता, जो एयरफोर्स में थी. और मुझे लगता है कि टिल डेट वो एयरफोर्स में सबसे ऑथेंटिक मूवी है. एंड दैट इम्प्रेस्ड मी एंड दैट इट वाज माय ड्रीम टू फॉलो एंड जॉइन द एयरफोर्स. दैट्स नाइस सर। सर, बचपन में जो हम देखते हैं वो मोटिवेशन भी रहता है, एक इंस्पिरेशन भी रहता है और हमें लगता भी है कि हम कुछ तो बेस्ट कर जाए. बट जैसे आप उसके ट्रेनिंग ले गए, मैंने सुना काफी ट्रेनिंग हार्ड होती है, तो उस टाइम पे कभी ऐसा लगा नहीं कि जो मैंने सोचा था वो ठीक है, अब नहीं करना मुझे? देखो, सिंपल सी बात है. एक कहावत है, डूइंग वॉट यू लव इज कॉल्ड पैशन, इट्स नॉट अ जॉब. ठीक है. और अगर आप पैशनेट हो किसी चीज़ के लिए तो इर्रिस्पेक्टिव जो चैलेंज आपकी तरफ हो, आप कोशिश करोगे उसको पार करने के लिए. अब फौज में जो भी ज्वाइन करता है, चाहे वो फैमिली बैकग्राउंड फौज से हो या प्योर सिविल बैकग्राउंड से हो, जब तक वो देखता नहीं है और वो ट्रेनिंग करता नहीं, उसको थोड़ी पता कितना टफ हो और कितना डिफिकल्ट हो. चाहे मेरे फादर फौज में होते या ग्रैंडफादर होते, वो किस तरह के इंडिविजुअल है और उन्होंने किस तरह से ट्रेनिंग ली, उस पर मेरा परफॉर्मेंस निर्भर नहीं है. आई एम एन इंडिविजुअल. अगर मैंने चुना है कि मैं फौज में जाना चाहता हूं तो आई शुड बी विलिंग टू एक्सेप्ट वॉट एवर चैलेंजेस कम माई वे. एंड इफ आई रियली लव एंड रियली वॉन्ट टू डू इट, then no challenge is great enough. As simple as that. Training tough is all English language. What you achieve, how you cope, and what is inside you, that is all that matters. चाहे आप किसी भी फील्ड में हो ना, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, हर चीज़ टफ है. लेकिन इफ़ यू रियली वॉन्ट इट, रियली बैडली वॉन्ट इट, यू विल डू इट. सो टफ इज जस्ट अ सिंपल वर्ड. एंड सर, इंडियन एयरफोर्स ही क्यों? जैसे मैं बता रहा हूँ, जब मैं छोटा था तो मेरे को फ़ौज से बहुत ही ज़्यादा मैं इम्प्रेस था. यूनिफॉर्म से बिकॉज जैसे मैंने बताया, मेरे ग्रैंडफादर पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थे. उसके बाद जब इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन किया एंड ही वेंट ऑन टू बिकम अ डायरेक्टर जनरल. ही वाज डायरेक्टर CBI. तो बचपन में मैंने काफ़ी टाइम उनके स्टेशंस में स्पेंड किया. वो डायरेक्टर होते थे नेशनल पुलिस एकेडमी में, जब माउंट आबू में होता था. और मैं छुट्टियों में जाता था, तब मैंने ये यूनिफॉर्म देखा, उससे मुझे बहुत ही अट्रैक्शन हुआ था. एंड
लाइक आई सेड, सब्सिक्वेंटली जब मैं क्लास 6-7 में था मैंने विजेता देखी और एयरफोर्स ने मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट किया। तो क्लास 6 और 7 से ही मैंने काम करना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट आई थिंक मेरे स्कूल में सारे टीचर्स, मेरे सारे स्टूडेंट्स वो जानते थे कि मैं फ़ौज जाना चाहता हूँ, बिकॉज आई वॉज सिंगल माइंडेड इन इट, एंड दैट्स हाउ एयरफोर्स हैपेंड। ओके, दैट्स नाइस टू हियर सर। एंड सर, इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग कैसी होती है? सो टफनेस या कितनी ट्रेनिंग टफ है मैं उसके बारे में क्या बताऊं। बहुत सिंपल सी बात है ना। जैसे मैंने बताया, आई वॉज 17 जब मैंने फौज एनडीए ज्वाइन किया, ठीक है, जस्ट आउट ऑफ स्कूल। अब आप आसपास में देख लो, जो 17 साल का बच्चा होता है, ठीक है, वो 17 साल के बच्चे को 3 साल में एक ऐसा सोल्जर बनाना है जो देश की रक्षा करे, जो दुश्मन के साथ भिड़ जाए। आपने रिसेंटली एक मूवी देखी होगी 21, जो ऑफिसर था जिसने टैंक टू टैंक बैटल बसंतर में की थी, ठीक है, वो भी 21 साल का था। 21 साल में मैं कमीशन हुआ था। तो अगर मुझे भी मौका मिलता या मेरे को भी ऐसा एक सिचुएशन होता तो मुझे भी वही करना पड़ता। तो ट्रेनिंग तो टफ होनी पड़ेगी। फाइनली यू आर डिफेंडिंग द नेशन एंड इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ, नॉट ओनली योर लाइफ। लाइक दे से, अ सोल्जर डज नॉट फाइट व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ हिम, ही फाइट्स फॉर व्हाट ही इज डिफेंडिंग विच इज बिहाइंड हिम। तो देश का भरोसा आप पे है। अगर ट्रेनिंग टफ नहीं हुई, अगर आपने भरोसा तोड़ दिया, तो 3-4 साल की ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा। दैट्स नाइस टू हियर सर। एंड सर, ये जो ट्रेनिंग जब होती है, सारा ट्रेनिंग का टाइम स्पेन जो आपने बताया 3 साल, इसमें क्या क्या चीज़ों की ट्रेनिंग होती है? क्या सिर्फ हमें मेंटली प्रिपेयर किया जाता है? क्या हमें फिजिकली ट्रेन किया जाता है? ऐसी ट्रेनिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बताऊंगा, ठीक है। नेशनल डिफेंस एकेडमी 3 साल की ट्रेनिंग होती है। उसमें आप बीएससी, मेरे टाइम पे बीएससी और बीए करते थे, अब बीकॉम भी है, अब मास कंप्यूटर साइंस में भी है, अब सिलेबस चेंज हो गया है। लेकिन इसके साथ ये सिर्फ बीएससी में आप सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं करते थे, मिलिट्री हिस्ट्री, मिलिट्री ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिर थिंग्स लाइक अ फॉरेन लैंग्वेज, ऑल दीज वर इंक्लूडेड। फिजिकल ट्रेनिंग, राइडिंग, स्विमिंग, ड्रिल, पीटी, क्रॉस कंट्री, स्पोर्ट्स, ग्लाइडिंग, आर्मी ट्रेनिंग, सेलिंग, जो चाहे आप कोई भी रेल्म सोच लो इस दुनिया में, हर चीज़ की फैसिलिटी नेशनल डिफेंस एकेडमी में है। क्योंकि जब आप एक फ़ौज में ज्वाइन करते हो ना, यू नीड टू बी ऑल राउंडेड। हमें ऐसा कोई नहीं चाहिए जो एक चीज़ में एक्सेप्शनल हो। हम ऐसा कई कैडेट चाहते हैं या कोई ऑफिसर चाहते हैं जो हर चीज़ के बारे में जानता हो और हर चीज़ में एवरेज हो। बिकॉज आपको क्या पता कल क्या सिचुएशन फेस करें। एक मूवी थी लक्ष्य, राइट, जो ऋतिक रोशन की थी। उसमें आप ध्यान रखोगे, एक सिचुएशन था जहाँ पे उनको सिलेक्ट करने थे कुछ लोग। उन्होंने उन लोगों को सिलेक्ट किया जिनको माउंटेनियरिंग आती थी। अब आपको क्या लगता था कि उस टाइम पे उनको पता होगा? एनडीए में तो कोई बताता नहीं कि शायद माउंटेनियरिंग की जरूरत पड़े। लेकिन दैट इज व्हाट एनडीए टीचेस यू टू टेक ऑन व्हाट एवर चैलेंज। इसलिए आपको हर चीज का इंट्रोडक्शन मिलेगा, चाहे आप कोई भी रेलम सोच लो। सो एक्सटेंट ऑफ ट्रेनिंग इज अनलिमिटेड, ठीक है। इट इज नेसेसरी, इट्स नेसेसरी टू मेक यू, बिकॉज फाइनली एज दे से, नेशनल डिफेंस एकेडमी इज द क्रेडल ऑफ मिलिट्री लीडरशिप ऑफ दिस कंट्री। सर, 21 ईयर्स की एज है, आप कमीशन हो गए, राइट? एंड उस टाइम पे पहला दिन कैसा लगा आपको? मेरा फर्स्ट डे आफ्टर कमीशन, ऑफ कोर्स वो तो पासिंग आउट परेड के बाद होता है, तो दैट इज़ वन ऑफ द प्राउडेस्ट मोमेंट्स। एंड उसके बाद छुट्टी मिलती है करीबन 2-3 हफ्तों की, और उसके बाद अपने ऑपरेशनल स्क्वाड्रन चले जाते हो। तो आपको लगता है यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग, बट इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग। आपने अब तक एक सीढ़ी पार की है, लेकिन सीढ़ी पार करके आप बस एक ओहदे पर पहुंचे हो, उसके आगे कई सारी सीढ़ियाँ हैं। तो अगर किसी ने सोच लिया कि मैं कमीशन हो गया और मैंने एम अचीव कर लिया, तो यू आर बीइंग डिसऑनेस्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दैट इज जस्ट द बिगिनिंग। अब तक इस देश ने, सिटीजन्स ने, एनडीए, आईएमए, एएफए, नेवल एकेडमी में आप में इन्वेस्ट किया है। दे हैव स्पेंड मनी, एफर्ट, time and all their experience to make you reach a particular standard. Now it is up to you to build up on whatever you have learned and prove to the world that जो इन्वेस्टमेंट आप में किया है वो इतना रिटर्न मिले इस देश को कि ये देश आपके बारे में प्राउड हो जाए। सो द फर्स्ट डे, I wouldn't say every day in the forge is like a first day. Enjoy every day. Every day should be for you something to achieve, because finally it is somebody's money that has been invested in you.
सर आपने 26 साल या 2 डिकेड से ज़्यादा आपने इंडियन एयरफोर्स में टाइम बिताया है। ऐसी क्या चीज़ें सिविलियन कभी नहीं समझ सकता? देखो, मैं ऐसे तो नहीं कहूँगा कि सिविलियन समझते नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे सिविलियंस आई कम अक्रॉस नाउअडेज हु अंडरस्टैंड फौज। बट ऐसे बहुत सारे सिविलियंस हैं who do not understand the sacrifice that is required to keep this country safe. एक बहुत अच्छी कहावत है, we are free, we are independent, but independence or freedom is not free. It still costs soldiers, not money. There are still soldiers today who are losing their lives not because they are fighting a battle, but they are spending time in such harsh locations at minus 50 degrees, plus 50 degrees, in jungles, in ravines, in remotest corners of this world. And some of them are losing their lives not because they are being shot or they are facing bullets, because of the elements, because of the weather that they face. It is not easy. They spend 3, 4, 4, 5 months isolated. It affects them mentally. And this is something which I want civilians to understand. In terms of today, what has happened is everybody is extremely political. Everybody wants to pursue a political agenda. Please do so. You are free. This is a democracy. Pursue your political agenda to the extent you want to. लड़ो, डिबेट करो, झगड़ा करो. लेकिन ये याद रखना एक छोटा सा फर्क है. In your realm to criticize the government or the state, please do not end up criticizing this country. In your realm, on your attempt to be anti-government, anti-state government, anti-political party, do not do something that becomes anti-national. People have forgotten the difference being between anti-government, anti-party, and anti-national. And that is the difference I want every citizen to understand. Because remember, I keep saying, okay, a soldier does not fight what is in front of him. He fights what he's defending behind him. And therefore, it is the duty of every single soldier to be a citizen a soldier can be proud of. Yes. सर आपके जीवन में ऐसा कोई दिन आया जब आपको जेन्युइनली लगा कि अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगा? आपके 2 डिकेड्स प्लस अपने इंडियन एयरफोर्स में बिताया। देखो, टू बी ऑनेस्ट, व्हेन आई जॉइन द फौज आई न्यू व्हाट टू एक्सपेक्ट. ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि इवन दो आई वाज 17 years old मुझे पता नहीं था कि जब आप फौज ज्वाइन करते हो तो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ लाइफ. बट देयर इज़ अ रिस्क ऑफ लाइफ एवरी डे. आई स्टे इन बॉम्बे. जो लोग मुंबई लोकल से ट्रैवल करते हैं उनको रिस्क नहीं है. आप पूना में ही हो, आप पूना में 2 व्हीलर चला लो तिलक रोड पे पीक ट्रैफिक में, रिस्क नहीं है आपको. रिस्क तो हर इंसान को है. हाँ, दिस इज एन एडिशनल रिस्क, बट यू नो व्हाट द रिस्क इज, राइट? यू आर हियर टू फाइट अ वॉर, यू आर नॉट हियर टू प्ले वीडियो गेम्स, राइट? आजकल लोग वीडियो गेम्स आते हैं ना, लोग गन्स वन्स फायर करते हैं. यू कैन लूज योर लाइफ, फिनिश योर अम्यूनिशन, कम बैक, रीसेट, कैंसल द गेम, रीस्टार्ट अगेन. हियर देर आर नो रीटेक्स, राइट? मे बी द मिस्टेक दैट यू मेक कुड बी योर लास्ट, but that is part of your life. Somebody somewhere will lose life, and that's why they say no, freedom isn't free, it costs soldiers. So there were cases when I said, or a case where there was an emergency where I said, I wonder when I can handle it. But my seniors were amazing. They trained me so well that I came back alive. Some people were not so lucky because maybe the situation was so high, it overwhelmed them. They could not come back. But that's part of Fauji life. You lose some, you win some. सर आपके करियर में ऐसी कौन सी स्टोरी है जो अभी भी आपको गूज़बम्प देती है? स्टोरीज तो इतनी है कि मैं अगर बताना शुरू कर दिया तो यू विल नॉट नो व्हेन टू स्टॉप. वो एक कहावत है, कहते हैं ना कि फौजी की ज़िंदगी में 2 फेज़ होते हैं. ठीक है, एक फेज़ ऐसा होता है जो ऐसी ऐसी जगह पे वो रहता है जिसका नाम दुनिया जानती नहीं है. नाल, सूरतगढ़, उत्तरलाय, फालोदी, है ना, भीटा, पूर्णिया, कोई जानता नहीं ये जगह है. तो हम लोग ऐसी जगह पे रहते हैं फैमिलीज़ के साथ, और जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे कहानियाँ बन जाती है. और जब हम रिटायर होते हैं तो हम कहानियाँ सुनाते हैं. तो ये लोग कहते हैं कि जो सेकंड होता है ना रिटायरमेंट के बाद, वो ज़्यादा डेंजरस होता है, बिकॉज ये फौजी सारी कहानियाँ सुनाना शुरू करता है और उसको रोकना मुश्किल हो जाता है. गूज बम्स तो ऐसी इतनी कहानियाँ हैं कि इट इज़ अनलिमिटेड. आप हर फौजी सेम है, हर फौजी को आप कहानियाँ सुनाओ, अपने कोर्समेट के बारे में बताएगा, ऐसे किसी कोर्समेट के बारे में बताया जो आज है नहीं उसके साथ. मेरे को गूज़बम्प्स तभी आता है जब मैं ये बात कहता हूँ, आज मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन मेरे ऐसे कई बैचमेट्स हैं, मेरे सीनियर है, जूनियर है, वो ज़िंदा नहीं है. वो आज भी ऊपर है, ऊपर से देख रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ,
और मैं किस तरह से अपनी ज़िंदगी बिताता हूँ आफ्टर रिटायरमेंट, और ये मेरी ड्यूटी है टू मेक देम प्राउड बिकॉज दे आर लुकिंग डाउन ऑन मी टू फिनिश द जॉब दैट दे कुड नॉट फिनिश ऑन दिस अर्थ. जब मैं ये बोलता हूँ ना तब मुझे गूज़बम्प आता है, अदरवाइज कभी भी नहीं. दैट्स नाइस सर. सर सबसे बड़ा सेक्रीफाइस आपके फैमिली ने क्या किया है आपके करियर के लिए? Oh my God. Parents ने तो yes कि at the age of 17 I went away. So obviously the son was not with them most of the time. Whenever they needed or I was on duty, कभी छुट्टी मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी. I remember first time मेरे parents ने एक foreign trip plan किया था जब मैं कमीशन होके 1 साल सर्विस हो गई थी. So they wanted to go to Singapore and first time ever with me, my sister and my parents. और मुझे छुट्टी नहीं मिली. So I couldn't go. So my parents and my sister went. ऐसे कई सारे हैं. Okay. For example, मेरी sister, she had just got into a university and she went abroad. And then suddenly मेरी शादी decide हो गई because मेरे को और कोई छुट्टी नहीं मिल रही थी. तो my sister couldn't attend my शादी. She could only attend the reception. ऐसे कई सारे इवेंट्स हैं, एनिवर्सरीज हैं, बर्थडेज हैं, शादियां हैं जो मैं अटेंड नहीं कर पाऊँ. सो पेरेंट्स यस, माई सिस्टर यस, एंड माई पर्सनल फैमिली, वाइफ एंड किड्स. माई वाइफ वॉज ऑल्सो इन द एयरफोर्स. हमने अलग अलग पोस्टिंग बिताई है. कभी कभी ऐसे होता था कि माई किड्स वेर अनवेल बट आई वॉज नॉट देयर, राइट. और देयर वर टाइम्स व्हेन माई वाइफ हैड टू डू 24 आवर शिफ्ट्स, आई हैड टू डू 24 आवर शिफ्ट्स. तो माई किड्स यूज्ड टू बी अलोन. तो sacrifices, I won't call them sacrifices that you regret, but in a way my parents became more hardened. My wife of course वो तो फौज में थी तो मैं क्या बताऊँ, and kids also learnt a lot such that today though they are old enough they adapt anytime anywhere and nothing seems to phase them. चाहे कोई situation आ जाए they will face it. So I somehow look at everything very positively. So I wouldn't say they had to sacrifice. They learned and benefited out of them and found something positive out of every situation that we faced. ओके सर, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में कभी ऐसा आपके लाइफ में आया है कि जब कोई नहीं आपको देख रहा है बट आप अकेले में रो रहे हो और ऐसा कुछ हुआ है? देखो, पर्सनल एंड प्रोफेशनल विल ऑलवेज क्लैश, स्पेशली इन द फौज, राइट. एक आई डोंट नो इफ यू नो बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ चेटवुड मोटो. चेटवुड मोटो सेज द वेलफेयर, ऑनर एंड safety of your country comes first always and every time. Welfare, honor and safety of the men you command come next always and every time. Your welfare, honor, safety come last always and every time. So if you are last, your country is first and your men are second, there will always be a crash and there is no contest. You know who wins in the contest. The nation wins, the men you command win. You will always lose and you should accept it because this is what is taught to you. So, and Fauj mein, let me be very blunt, you will never ever feel alone. There is no way, irrespective of the challenge, irrespective of the situation, you will not feel alone. That is the camaraderie. I know civilians may find it difficult to believe because there are times when you may feel very, very alone, insecure, there is nobody around, nobody to help me. It's not possible. Fauj is a brotherhood. Anytime. Today, if I want to go, suddenly I say, यार मेरे को अयोध्या जाना है राम मंदिर देखने के लिए, आई विल पोस्ट इट इन माई ग्रुप. विद इन 2-3 आवर्स somebody will contact me, मेरा एक बंदा है, मेरा पोस्टमेट है, तेरी गाड़ी हो जाएगी, तेरा घर हो जाएगा, क्या चाहिए बता. It will be done. Though I have left Forge 11 years ago, he may not be my batchmate, I may have done some course with him somewhere. Even if I have not done with him, he will find out somebody whom he knows and he'll say, sir मैं उससे टाइप करता हूँ, आपके लिए कर दूंगा. Forge में you cannot be alone. If you are alone in Forge, it is your own fault, nobody else's. ओके सर, ऐसा क्या एक ट्रूथ लाइफ के बारे में जो आपको बहुत टाइम लगे समझने? Life is not easy. It takes a long, continuous, hard effort to achieve what you want to achieve. Nothing comes easy in life. You need to work hard in everything because that's how life is. And today also I was giving a talk and this is the example I gave. जब आप रोड पे ट्रैवल करते हो, आई एम श्योर एवरीबडी ड्राइव्स, यू कम अक्रॉस अ स्पीड ब्रेकर, करेक्ट. द स्पीड ब्रेकर कम्स इन ऑल शेप्स एंड साइज. बहुत छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, कुछ बहुत ही टेरेबल होते हैं, कुछ तो कार ब्रेकर्स होते हैं, करेक्ट. बट आप जब ऐसे गंदा सा स्पीड ब्रेकर देखते हो, आप ये थोड़ी उसको देख के ये थोड़ी बोलते हो कि यार मैं मुड़ जाता हूँ और दूसरा रास्ता लेता हूँ. व्हाट डू यू डू? मे बी इट्स अ स्मॉल स्पीड ब्रेकर, यू विल जस्ट गो थ्रू एट द सेम स्पीड. Slightly larger, you will slow down. A real good one, you will come to a very slow speed, cross it and pick up.
और रियली खराब हुआ तो आप एंगल पे क्रॉस करते हो, करेक्ट? एंगल पे क्रॉस करके फिर चाहे पीछे वाला ब्रेक मारे, बट यू क्रॉस द स्पीड ब्रेकर, नो? Life is like that. You will find speed breakers of all shapes and sizes. Does it mean that you give up? No, you don't. You cross it. Maybe you slow down to a stop. You cross it, pick up speed, go back to 6th gear, 0 to 16, 10 seconds, pick up speed, wait for the next speed breaker, cross again, and tell yourself, I won. That's what life is about. So you will face challenges. सर, डर जो है नेसेसरी है सक्सेस के लिए या उसे हमें कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना चाहिए? भाई साहब, अगर इस दुनिया में कोई आपको बोल रहा है ना कि वो डरता नहीं है तो इज अ लायर. टेल मी वन ह्यूमन बीइंग, फाइंड a human being, get him to me, I will show him what he's scared of. If you're not scared, you cannot succeed. That fear of failure is always there. It is that challenge. Okay? They say courage is not the absence of fear, it is the conquest of fear. Fear is always existing. Fear is never absent. It is there. How you win over fear will tell you how much and how well you succeed. सर, पायलट के बारे में ऐसी क्या चीज है जो लोग कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं? देखो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. अनफॉर्चुनेटली मूवीज़ ने पायलट्स को इतना ग्लैमराइज कर दिया है कि लोगों को लगता है कि बीइंग अ पायलट इज जस्ट लिविंग अ लवली लाइफ, ट्रैवल द वर्ल्ड, मेक मनी, जस्ट एंजॉय, डूइंग नथिंग, जस्ट सिट इन द एयरक्राफ्ट, बैठो, ऑटो पायलट लगाओ, कॉफ़ी पियो. इट इज़ नॉट लाइक दैट. बीइंग अ पायलट इज़ एक्सट्रीमली चैलेंजिंग जॉब. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ. जो बंदा पायलट बनना चाहता है ना, जब तक उसको लाइसेंस मिलता है, कम से कम 3-3.5 साल लग जाते हैं, जस्ट बेसिक लाइसेंस. वो लाइसेंस कैसा है? जैसे आपको ड्राइविंग सीखने के बाद आरटीओ लाइसेंस देता है, बस. अब आप सोचो, उसके बाद अगर आपको फार्मूला 1 रेस चलानी हो तो आपको क्या मेहनत करनी पड़ेगी? जस्ट टू बिकम एन ऑनलाइन पायलट, ऑनलाइन बेसिक को पायलट, इट इज़ द सेम एफर्ट. सेकेंड, हर एग्ज़ाम में कम से कम 70% पासिंग मार्क्स चाहिए. ऐसी कौन सी फील्ड है इस दुनिया में जहाँ पे आपको पासिंग 70% है? और जैसे कि माई केस, आई बीन फ्लाइंग फॉर 36 years. Even now, I have to appear for exams, ground written exams, where passing is 70%. Forget about practical simulator exams. There is no scope of making a mistake. Because imagine, I fly, say, one flight, 200 passengers' lives. 4 sectors in a day, 800. If I fly 50 flights, about how much? About 4,000? 40,000? Make it in a year, 12 months, about 5 lakh lives, 5 lakh passengers. That is the responsibility. And एक बार मैं घर से निकलता हूँ ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे 15 घंटे लग जाए वापस आने के लिए. It doesn't matter whether it's day, whether it is night. I may need to start at 1 o'clock in the morning and continue till 1 o'clock in the afternoon. I may need to start at 1 o'clock in the afternoon, continue till 1 o'clock at night. So your day, time of sleep, your meals. Maybe I have left house at 7:30 and now I can have a cup of tea only at 10 o'clock. I may have to skip breakfast, or my breakfast may be at 11 o'clock. My lunch may be at 4 o'clock. It's a lot of sacrifice. And people say, he's traveling from one place to another. But let me give you an example, right? Let's say I take off from Mumbai in this season, 36 degrees, 100% humidity. I go to Srinagar. It may be rain and cold there. I get airborne from Srinagar, reach Delhi. Temperature is 45 degrees, and then come back to Mumbai. Imagine what your body goes through just on the surface. Forget about that. Every time you climb, the aircraft is under pressure. 4 times a day, your body goes through massive pressure changes. Takes a toll on your body. So, ये जो ग्लैमर दिखाता ना, जो रनवे 34 मूवी दिखाई है जहाँ पे द पायलट इज लैंडिंग आंखें बंद करके, भाई साहब, दैट्स नॉट एज ईजी. It's an extremely challenging life and it is extremely difficult. But it's enjoyable. If you take it as a challenge that is to be won, you will enjoy it. But do not join aviation or do not think of a pilot's life as something it's just for glamour. No, it is not glamour. It's a lot of hard work, lot of sweat, lot of sacrifices, lot of time away from home, lot of time missing so many events, anniversaries, birthdays, get together. Like for example, my school classmates plan a get together. We'll plan a get together in July. Okay, 4th and 5th July. आएगा क्या? I said, please wait till 26th of June. He said, why? I said, till my roster comes out. Or if I get an off, I'll come. He said, but it's on a weekend. Why can't you come on a weekend? So मेरा next question होता है, when is the maximum time you travel?
On a working day or a weekend? Well, the weekend. So that's why I have to work the maximum on a weekend. That's what pilot's life is. नाइस सर. एंड सर आपने कितने टाइप के प्लेन्स चलाए हैं? Varieties, about 15 varieties. So right from a glider to a propeller, front propeller, tail propeller, trainer jet, fighter jet, single engine propeller from the civil aircraft, multi-engine commercial jet, all types. But my favorite will always be the MiG-21, unmatched. एंड सर सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है? MiG-21, without doubt. There's nothing like it, nothing ever was, nothing like will ever be like the MiG-21. Chance ही नहीं है. और सर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट? Difficult I won't say. हमेशा ये याद रखो, if you are a pilot, never take the aircraft for granted. There is a lovely quote I keep saying every time I speak to young people who want to join aviation. This quote is simple. If God wanted man to fly, he would have given you wings naturally like birds have. The fact that he did not give you wings means he did not design you to fly. But you still fly means you're doing something that nature did not design you to do. That is the challenge of your job. Every time you take 200 passengers who want to fly, you're doing something against nature. That is the reason the pilot's job is so difficult. That's the challenge you face. I do not know if 90% of the world understands what I just said. Think about it, listen to it again, and then you will realize what is the enormity of the task that pilots do. यस सर. एंड सर कोई अगर हमें मिशन करना है, राइट, कोई कंट्री है उसका मिशन करना है, एज अ फाइटर जेट आप चला रहे हो, तो कैसे ऑपरेशन आप प्लान करते हो? तो देखो, मिशंस इतने वैरायटी के होते हैं कि इफ आई स्टार्ट डिस्क्राइबिंग एवरी मिशन इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, सो आई विल जस्ट डिस्क्राइब वन सिंपल बेसिक मिशन. लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुना, राइट? ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या किया? हमने एयरक्राफ्ट में कुछ वेपन्स फिट किए एंड वी बॉम्ब्ड एनिमी टेररिस्ट कैंप्स. अब लोगों को लगता है कि यू गो एंड बॉम्ब द एनिमी कैंप्स, so you decided one fine day, let's go, you found the target's intelligence, aircraft get airborne, fire the weapons and come back. No sir, it is not like that. Every pilot who has flown that mission must have practiced and trained for years together, maybe 4 years, 5 years, 6 years, 7 years, and to achieve that level of perfection. And that's not just enough. You don't go as a single aircraft to put those weapons there. No, there's a full complement. So what happens is, first is the aim is decided that this is what we need to do. Let's say you decide I'm going to bomb a particular airfield, right? Now that airfield will be defended. It will have surface to air missiles, it will have guns, it will have enemy interceptor aircraft. So first you will find out about the airfield. Then you will decide कि इस एयरफील्ड में क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे डिस्ट्रॉय करना है. सिर्फ रनवे डिस्ट्रॉय करना है, अम्यूनिशन डम डिस्ट्रॉय करना है, या उनके जहाज डिस्ट्रॉय करने हैं, या रेडार्स डिस्ट्रॉय करने हैं. सो ऑल दिस इंटेलिजेंस विल बी प्लान्ड. Once the intelligence will be planned, then you will decide to destroy that, how much weapons do I need? Maybe 4 bombs, 8 bombs, 15 bombs, missiles, rockets, smart weapons. When you decide the number of weapons, now you go backwards and say, to take these weapons, how many aircraft and what type of aircraft I'll need? Because some targets may require to go close in an attack. Some targets you can fire from standoff. Now, depending on what weapon you use, depending on what weapon which aircraft can carry, you will plan that aircraft. So it is never like this कि मेरे को एक टारगेट अटैक करना है, 4 जैगवार्स भेज दो, अटैक करके आओ. नहीं, उस मिशन में जैगवार्स होंगे, मिग-29 होंगे, मिराज 2000 होंगे, Su-30 होंगे, रफाल होंगे. Not only that, you may have air defense sensors in the air. You may have AWACS in the air who are now scanning the enemy area, because are there interceptors getting airborne? When all this is decided, then you decide what is the time of attack. Because you need to choose a time where intelligence tells you that the chances of success are maximum. Then you also wonder, should I send this mission? What is the cost I will be willing to accept in terms of aircraft being shot down, in terms of weapons not hitting? And therefore you can't say I've taken 4 weapons, all 4 weapons will fire and reach the target. Maybe one weapon doesn't work. It's finally a technical aspect. It's a machine. Machines can fail, so you'll cater for that. Not only that, once you have fired the weapon, you also want to know whether it is the target, has it got the desired damage that you want it to.
then you'll have reconnaissance aircraft, or you will have battle damage assessment aircraft, or you'll have satellite imagery. If you want satellite imagery, the satellite should be positioned accordingly, right? Then you'll have electronic intelligence aircraft. You have jammer aircraft, electronic warfare aircraft that will jam the enemy sensors so that they don't detect our aircraft. Then you'll have air defense aircraft. That means, let's say there are 4 aircraft going to attack, enemy interceptors can intercept them. Therefore, you will have your own air defense aircraft which will be along with them. Should the interceptors come, our air defense aircraft or air defense escorts will take on those enemy to ensure that they are taken away from the strike package and the strike package can go through. Once you dump them, that's not enough. After you drop the bombs, you should have sufficient fuel to come back. En route, if you're attacked, you should have fuel to fight the enemy and still come back. There's no point in dropping a bomb and then wasting an aircraft or ejecting or becoming a prisoner of war. You need to come back, because the moment you're a prisoner of war, your nation is vulnerable. So there are so many aspects involved, and then finally when everything is decided, then you have a massive briefing. That briefing could be 1 hour, 1.5 hours, 2 hours to cater for every aspect. And when you get airborne, you don't talk to each other in the air. It's a no RT mission. Everything is planned on the map, on time. With modern technology, a lot of things are said. Data is shared. Maybe one aircraft is designating the target, the other aircraft is dropping the weapon. Or you may have your own commandos or special forces who are there with a laser weapon, with a laser illuminating the target and the weapon being fired from a separate platform. So many things in a mission and such a huge variety. And that is the challenge of being a fighter pilot, because you need to know all kinds of missions. You may be doing a ground attack mission once. Next, you may be doing an air combat mission. Third, you may be doing an air escort, or you may be doing an electronic intelligence, or you may be doing an EW escort. You could be doing anything. So there are so many missions. To get a general idea about the mission, there is a movie called Skyforce, right? If you see the movie, it's about Akshay Kumar. That it's got a nice briefing about what mission they will do, how they executed a mission. It's a Sargodha strike of 1965, 7th November 1965. That's a general mission, but of course, that's about 50 years ago, 60 years ago. Now technology is much better. You got standoff weapons, you got all kinds of weapons, drones. That has changed the complete order of the battle, right? The drones could be used to create a decoy. So there are so many types of missions. It's impossible for me to explain what is the kind of mission, but this is broadly just for general understanding. That's nice, sir. And sir, traditional approach जो था हमारा कि हम इंडियन एयरफोर्स में है और ट्रेडिशनल अप्रोच था हमारा वॉर के साथ, वो अभी मॉडर्न वे कैसा है? तो देखो, मैं बहुत सिंपल बताता हूँ. When air warfare started the first time, right? तो उस टाइम पे क्या था? जहाज में बॉम्ब रखते थे और ऊपर से बॉम्ब फेंकते थे, right? Then they realized कि this is more risky. तो you required additional people. तो उन्होंने क्या कि एयरक्राफ्ट पे पाइलट्स बना दिए जहाँ पे बॉम्ब अटैच किए. And bombs were just dropped in waves. 100 aircraft would go with bombs and dump the bombs. का area bomb जहाँ लग जाए. Then they said, यार बहुत सारे bombs waste हो रहे हैं, बहुत सारे civilians मर रहे हैं. So they said, we need to be more specific. So they started becoming very specific, because obviously जितना आप weapon use करोगे उतना deplete भी हो जाएगा ना. You can't produce at the same rate. So they decided to come out with better weapons, more accurate weapons, so that lesser aircraft could go. And obviously, if you send 100 aircraft and the enemy shoots them down, you'll lose 20 aircraft. Those 20 aircraft are not available for the second mission. So I said, we need to send short waves so that they can hide from the enemy, quickly attack and come back, and then send back for an attack. When that happened, the defenders started developing better techniques, right? When they developed better techniques, then the attacker said, what should I do? He said, I need to fire a weapon such that I am outside his air defense weapons. So they started having standoff weapons. Standoff weapons means what? Standing outside the range of the enemy air defenses and dropping your weapon. When that happened, the defender said कि यार अगर मेरा मिसाइल है लेकिन वो मिसाइल के बाहर से फायर कर रहा है तो मुझे और कुछ चाहिए. Then they said, let's talk of interceptors. Aircraft interceptors, combat air patrol. So when you know that the enemy is going to attack, you will have interceptors in the air all the time, and they keep changing. So I said, moment an aircraft is seen on my radar, I will send the interceptor, shoot him down. When that happened, you said कि ground attack aircraft के साथ खुद air defense escort भेजेंगे. So it continues. Today you have drones. If you see the war in Ukraine and the present war in the Middle East, the use of drone is fantastic. Combat drones, right? Satellite imagery, satellite intelligence. You see what Israel did. You remember the case of the pagers and the mobiles bursting and so many people killing?
That's the new kind of weapon. There is also what is called as information warfare, psychological warfare. You give so much of incorrect information that you affect the psychology of that nation. If you start believing it, you may turn against your own country. Let us say so much of information is bombarded on Iran that they have lost in every other sector. Whichever sector is holding out, he says, maybe I'm the only one fighting, I might as well also surrender. So many aspects of warfare. The modern warfare is crazy. It is net-centric, it is satellite controlled, it is communication controlled, and that brings another challenge. They can jam your communications. They can jam all your satellites. Today you have GPS. There are anti-satellite weapons. If you're using satellite, they can shoot down your satellite. So modern warfare is way different, and we don't even know what's going to come about next. It's just a challenge of who is better. I develop something to beat you, you will find something to counter that. The moment you find something to counter, I'll find something better. The moment I find something better, it comes into the public, you'll find something to counter. So if you think that whatever weapons we have, what is shown in public is all that we have, no sir, don't make that mistake. I'm sure there is a lot more, much better, much more capable, which you can't explain for obvious reasons. सर आपने इतने मिशन किए, बट कोई एक ऐसा मिशन आपको याद है जो बहुत डेंजरस था? यार देखो, every time you get airborne, there is a risk, right? It is as simple. I'll give you an example. In 1993 or 94, we were doing a normal training mission. Me and another of my buddies, both were trainees, and there were two leaders, operational pilots. We got airborne. I was number 2, he was number 4. So 1, 2, 3, and 4. I was number 4. Number 1 got airborne. Number 2 got airborne. Number 3 got airborne. As I got airborne, this guy gave a call. I have a bird hit. I'm pulling up. So the leader said, check your engine parameters. He said, I have a flame out. Flame out means engine has failed. He said, attempt a relight. I was behind him. This aircraft kept pitching up. And then he reached a height where the aircraft may not have sustained because the speed was washing off. He said, no relight, and his nose came down. And he started descending. He says, I have no relight, I'm ejecting. And ejected. Simple training mission, but it's risky. So any mission that you get airborne, the risk is the same. You can't do anything about it. Sometimes the environment is against you. I was flying a civil aircraft, Mumbai to Jaipur, absolutely fine, lovely weather. We got airborne, continued climb. At cruise, I leveled off. As I leveled off, I called the cabin crew. I said, yaar, can you give me a cup of coffee? She said, yes, sir. She put the intercom down. Suddenly, ting, the warning came out. The hydraulic pump gave a warning. She called back, sir, I can hear an explosion on the left engine. The passengers are scared. I said, hang on, I'll explain. So when you're in aviation, every mission has got a challenge. Every mission has got a risk. Can't do much about it. But that's why what we train for. That's why pilots are there. That's why 2 pilots are there in civil aviation. सर, जो अभी मिडिल ईस्ट में वॉर्स की सिचुएशन है, उससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है? सो देखो, इम्पैक्ट मल्टीपल टाइप्स के हैं, ठीक है. एक तो ऑब्वियसली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ऑयल, गैस, दिस इज समथिंग जो आई थिंक द एंटायर वर्ल्ड इज रिसर्चिंग द इम्पैक्ट ऑन एवरी नेशन. हाँ, इंडिया पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है बिकॉज वी आर नॉट अ प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल एंड गैस, और हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ ऑयल एंड गैस इज ह्यूज, करेक्ट, and we are dependent. Let's be very honest, nobody can change that. It is not as if the dependence has happened yesterday, day before yesterday, 1 month, 1 year, 10 years. It's always been there. So that will always affect us. जब oil कम होगा तो cost बढ़ेगा, and then lot of services will have to cut down. Like recently the Prime Minister made an appeal, right? Not because he doesn't want to spend, because the oil is not coming. अब तुम क्या कर सकते हो, right? So that is one aspect. But उसके लिए there are so many experts who talk about it that I wouldn't like to go into that aspect. There's another thing which I would like to talk about, which I'm absolutely sure my colleagues in all the 3 services are really, really looking at it and studying very, very well. One is the lesson that in this world, there are no permanent friends and enemies. There are only conveniences. So a nation that's your friend today can become your enemy tomorrow. A nation that's your enemy tomorrow can become your friend. And don't depend on anybody to defend you. Be Atmanirbhar, to quote the term. Find your own defenses, find your own systems, so that tomorrow should a situation arise where a group of nations is against you, you're still strong enough to defend yourself. That's one. Secondly, this is not new, right? You talk of Vietnam War, a superpower got beaten. Talk of Afghanistan in the Russian invasion, USSR then, superpower got beaten. Afghanistan again, United States,
got beaten. So the lesson is, don't go and fight somebody else's war. This is what is happening in Iran today. The Americans, the world's largest superpower, the biggest naval fleet, and say what have you. 2.5, 3 months, what has happened? The Americans have had to eat humble pie. Correct? One nation, Iran, under sanctions for 10 years, has sustained the war. Not only sustained the war, created so much damage, all these thing about oil and gas and all that, one nation. And that is the thing that you need to learn. If Iran had been more militarily strong, had weapons that would have reached United States, you think United States had the guts to attack them? They wouldn't have had the guts. That teaches you something. I can keep expanding, but it's simple. Make yourself so militarily strong that before somebody casts an evil eye, they should know that one attack and the repercussions could be severe. That is something that I hope our nation, this government and the military leaders are learning. यस सर एंड सर ऐसा कोई एक सेंटेंस जो इंडियन सुनना चाहती है आपसे तो वो एक सेंटेंस क्या रहेंगे Just one sentence. I think I said it earlier. I would like to say this again to those who do not wear the uniform. The soldiers do a very, very hard job. They keep working day and night to defend you. All they need is you to be a citizen that the soldier can be proud of. He works hard. All that he requires is the citizen to be proud of this nation, proud of the effort that he does. I keep saying this. You are a citizen. It has certain duties. Today everybody wants rights. हर एक बंदा चाहता है कि मेरे को freedom of speech चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को तुम infrastructure दे दो. Why don't you reduce the price of petrol? Why don't you allow me to do this? Why don't you allow me to do that? Have you ever asked what I can do for the nation? There's a lovely quote. Okay, before you ask what a nation can do for you, please ask yourself what you can do for the nation. Try and think of like that. There were times when schools used to teach fundamental rights and duties. I think it's time that we start teaching adults in this nation what are your fundamental duties. I think people have just forgotten. What concern you most about today's generation? I don't think I'm concerned about it because every generation feels they were better off than the next. And I don't like to do this syndrome. There's a big syndrome which says, when I was this is what we did. So what? Every generation changes. Right? What my grandfather did, my father didn't do. What my father did, I didn't do. What I am doing, my son doesn't do. What my son will do, maybe my grandson won't do. Everybody has different challenges. So just learn to accept it. For example, I used to go and do some soft skills training in various colleges. I never went to a college. Okay? So it was difficult to understand their language. So what did I do? I spoke to two of my friends who were young, understood, and then I realized this generation got its own different challenges, right? So accept what they do. Just go along with them. Yes, correct them where necessary. Give them advice, but don't give unnecessary advice. Don't give them too much advice. Don't confuse them. Allow them to take a decision. Allow them to be responsible for their decision. So that they understand, jo decision मैंने लिया है, I only have to face the repercussions. I won't say it concerns me, but every generation has its challenges. It is not right to criticize any generation or to say that this generation was better than the next. We had Sunil Gavaskar. When he left, people thought there would be nobody. And you got Sachin Tendulkar. When Tendulkar was at his peak, we said, who after him? We got Virat Kohli. After Virat Kohli, who? We got Shubman Gill. Today you got a 15-year-old Vaibhav Suryavanshi. Right? Can you say that what Vaibhav Suryavanshi is doing now, no, hitting sixes is not good because Gavaskar didn't hit so many sixes? The time was different, the challenge was different, environment was different. Yes, sir. So rapid fire question करें? हाँ जी sir, please, anytime. Fighter jet or commercial aircraft? No contest, fighter jet. Discipline or talent? Discipline, anytime. One book everyone should read? I Dare by Kiran Bedi. Okay. One life lesson in a single sentence? Integrity is when you do the right thing when no one is watching. Okay. A person who inspired you the most? I may be crucified for this, Adolf Hitler. Oh. Mountains or beaches? Mountains, they are more challenging. If not a pilot, what would you have become? Nothing else. Pilot, pilot, pilot.
फाइटर पायलट, फाइटर पायलट, फाइटर पायलट। ओके सर। एंड सर 20 से 30 साल बाद अगर कोई आपको याद करे तो कैसे याद रखे? कोई मुझे याद क्यों करे? As simple as that. Why should you go back in history and remember somebody? हाँ, the only thing that I would expect them to do is to learn कि maybe there was something that this guy did right because of which he lived the life he did. Okay? I always say this: write a story about your life in such a manner that somebody should be able to learn from it. Okay? Don't preach your story. I would much rather people learn from me by looking at what I do rather than me tell them what to do.